लगातार हो रहे तकनीक में बदलाव व्यवसाय करने के तरीकों में भी बदलाव लेकर आ रहा है। आज रोजमर्रा की जिंदगी में आप हर पल किसी न किसी ऐप पर निर्भर हैं, पर उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझते हुए नए ऐप्स का निर्माण करना और उपभोक्ताओं के अनुसार तकनीक को सरल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है builder.ai जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजन की। तो आइए आज नए भारत की नई ऊंचाइयों के इस एपिसोड में हम अंजू चौधरी जी से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर builder.ai कैसे और क्या काम करता है। थैंक यू सो मच अंजू मैम फॉर जॉइनिंग अस। बेसिकली नए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगी। नए भारत की नई ऊंचाइयां एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम स्टार्टअप्स की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने अपने ही इंडस्ट्री एरिया में कुछ नए आइडियाज के साथ आए हैं और आगे ग्रो करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं आपसे builder.ai के बारे में पूछूं तो हाउ डज दिस मतलब बेसिकली पहला सवाल ये होगा कि बिल्डर आई है किस बारे में, व्हाट इज ऑल अबाउट, करता क्या है, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमें भी और हमारे दर्शकों को भी बताएं। Thank you, Aarti. सबसे पहले thank you for having me here. So builder.ai, if I have to put this simply, we really everyone comes with great ideas, right? So वो जो एक आइडिया आपके दिमाग में आता है उससे आप एक ऐप आपके हाथ तक पहुंच पाए, that is what we are trying to do. So we basically want to make software accessible to all. Now, in this journey, if for the other viewers who would want to understand this more technically, we are an app development platform. There's an AI-powered assembly line which connects reusable Lego-like features to network of creators. But जो main हमारी philosophy है, vision है, वो यही है that how do you empower everyone to unlock their true potential? How do you make software accessible to all? And इस पूरी journey में how do you make software development as easy as ordering a pizza? तो मैम हर किसी भी जर्नी या किसी भी आइडिया की एक जर्नी होती है। सो व्हाट्स द जर्नी ऑफ builder.ai, मतलब ये पहला फर्स्ट आइडिया क्या था, फर्स्ट विजन क्या था इसके पीछे? Okay, so this is interesting. हमारे founder and CEO Mr. Sachin Dev Duggal, he is a techie himself, Imperial College pass out London, and when he was building his idea, he realized that he struggled so much with the with the developers that he was working with back then. फिर उन्होंने सोचा अगर मैं खुद I come from technical background, I am sitting in San Francisco, अगर मेरे लिए इतना मुश्किल है तो उन सभी लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा who may not be as privileged as I am to be where I am today, right? There are so many countries where you do not have everything so accessible. There are so many great ideas, but people may not have the technical know-how to build it. So this is where it all started. That how do you ensure that without the limitations of knowing technology, how can you still empower everyone to build software? तो मैम बिकॉज ये स्टार्टअप है, हर स्टार्टअप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम चैलेंजेस फेस करते ही करते हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो आप लोग भी फेस करते हुए आ रहे हैं या आपको लगता है कि एक चैलेंज है जिसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है एज अ स्टार्टअप या आपको भी? तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं? तो मैं इसको स्टार्टअप का चैलेंज नहीं बोलूंगी, एंड आई गेस वी आर नाउ पास्ट दैट स्टेज, वी इवॉल्व्ड, and I would still not like to call it a challenge, but what everyone else is going through, हम सबने देखा है पोस्ट पैंडेमिक चीजें चेंज हो गई हैं, राइट? एक जो ऑडियंस है और या जो यूजर है वो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। हमारी लोकेलिटीज में पहले जो किराना वाला होता था या द फ्रूट सेलर एंड अदर्स, दे डिडंट हैव अ नीड फॉर एन ऐप या ऑनलाइन जाने की, बट अब यूजर एज अ यूजर आई डिमांड दैट, I want that, there's a shift in the user behavior. I want everything on my phone today so that it is easy. मैं अपना phone खोलूं, एक app में जाऊं, I order everything like Blinkit and everything, especially in India, right? You have delivery in 10 minutes. So when there is so much demand of, if everyone starting with this person has to go online, अब किसी को तो ये software बनाना है. So imagine कितनी डिमांड है सॉफ्टवेयर की, कितने लोगों को बनाना है.
बट क्या हमारे पास उतनी सप्लाई है टू फुलफिल दिस डिमांड? सो देयर इज अ मैसिव मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और ये जो नई डिमांड है, ये उस यूजर से आ रही है जो शायद टेक्निकल नहीं है। अब आप उसको तो नहीं बोल सकते कि अपना सॉफ्टवेयर अपने आप बनाओ। So now this is also coming from a user who is not technically very strong. So in my opinion, and this is an industry shift I would like to call, and not just a challenge with or anything, that, and more so after pandemic, that there's a huge mismatch between demand and supply. मैम, इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, पॉलिसीज की बात करूं, एक स्टार्टअप को ग्रो होने में कितना सपोर्ट मिलता है? और मतलब अगर आपको लगता है कि कहीं पे थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडिया में स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपका सजेशन जानना चाह रही हूँ, बिकॉज यू आर अ कंपनी जो बिल्डअप अच्छे से बिल्डअप हो चुकी है कहीं ना कहीं, एंड बट जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके सामने ये फेसेस आते हैं। बिकॉज मैं जितनों से बात कर रही हूँ, देवर लाइक कि पेपर वर्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, या फिर मेंटरशिप हम लोग को उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती है एज अ, मतलब जो नया स्टार्टअप है उसको। तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमें कहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है? See, I don't think so. We can really answer this objectively. It's not that easy an answer that can be given in a forum like this. But if you talk about initiatives, right, and that's what an individual looks at it. There are so many initiatives today that government is running. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Digital India, Made in India. So definitely the intentions are right, and everyone is working towards that. In India especially, I have never seen so much focus around startups in the past, right? We've passed that stage, but even for today we are helping some of these startups in our own way, right? But and you would also agree with me, let's take this event as an example. In the past, we've never seen such events happening so regularly in India. Now we have one of these events almost every month in some or the other part of India. The government is definitely very serious about this. But then there are challenges which are more at a global level, right? Which is which taking reference from the same demand and supply thing that I was talking about. If you see there's a globally there's a demand of about 450 million developers to a supply of about 50 million developers, and now some of these things are challenges that needs to be solved through innovation and really not, I mean, it can't be dealt at these levels that we're talking about. ओके मैम, सो मैम लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा, मतलब आखिरी सवाल मेरा ये है कि फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या कुछ भी एक पहला स्टेप रखना चाहते हैं, सो उनके लिए वन पीस ऑफ एडवाइस इफ यू वांट टू गिव, प्लीज। देखिए, सबसे पहली चीज तो होती है बिलीव इन योर सेल्फ. इफ यू हैव एन आइडिया एंड इफ यू हैव पैशन, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक. Get in that direction. Take help when needed, and you don't have to do everything yourself. Partner with people. Partner with people who's there to help you, and believe in yourself. That's it. Thank you so much, ma'am, for joining us, and thank you so much.